नमस्कार। इस सीरीज का 6th वीडियो में आप सबको मैं रथिन विश्वास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर किरबुर की तरफ से वेलकम करता हूं। आइए हम इस सीरीज की माइंस एक्ट का जो वीडियो सीरीज हम लोग अभी देख रहे थे उस सीरीज की 6th वीडियो माइंस एक्ट के 6th चैप्टर लेकर के आज मैं हाजिर हूं। हम लोग जिन लोगों ने ये फर्स्ट 5 चैप्टर मिस किए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा वो लोग अपना ये चैनल में जा कर के देख ले। बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स हम लोग बाद में एक एक करके अपलोड करेंगे। हम फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4 देख लिए हैं। सेकेंड वीडियो में इंस्पेक्टर्स एंड सर्टिफाइंग सर्जन चैप्टर 2 सेक्शन 5 to 11 देख लिए हैं। थर्ड वीडियो में कमिटीज के बारे में चैप्टर 3 जो सेक्शन 12 से 15 है वो देखे हैं। फोर्थ माइनिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइंस सेक्शन 16 to 18 ये देख लिए। फिफ्थ वीडियो में लास्ट डे में हम लोग प्रोविजन एज टू हेल्थ एंड सेफ्टी सेक्शन 19 to 27 ये फिफ्थ चैप्टर देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे आवर्स एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 28 to सेक्शन 48 ये 6th चैप्टर है माइंस एक्ट का। इसके बारे में इस वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं 28 से 48 तक। हम लोग एक एक करके सेक्शंस का टाइटल जान लेते हैं, उसके बाद एक एक सेक्शंस का डिटेल जानेंगे। सेक्शन 28 वीकली डे ऑफ रेस्ट, सेक्शन 29 compensatory day of rest, section 30 hours of walking, 30 on hours of walking below ground, 32 night shifts, 33 extra hours for overtime, 34 provision of employment of certain persons, 35 limitation of daily hours of walking including overtime of work, 36 notice regarding hours of work, 37 supervising staff, 38 exemption from previous provisions regarding employment, 39 powers to make exempting rule, 40 employment of persons below 18 years of age, 41, 42 and 44 अभी इस सेक्शंस नहीं है, डिफरेंट अमेंडमेंट के द्वारा इस सेक्शंस को रद्द कर दिया गया। सेक्शन 43 powers to require medical examination, 45 provision of presence of persons below 18 years of age in a mine, 46 employment of women, 47 disputes as to age, 48 register of persons employed। आइए हम लोग एक एक सेक्शंस का डिटेल्स जानते हैं। सेक्शन 28 वीकली डे ऑफ रेस्ट, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वॉक इन ए माइन फॉर मोर देन 6 days इन एनी वन वीक। हम जानते हैं वीक मतलब 7 days जो पीरियड है, 7 days पीरियड में मैक्सिमम 6 days कोई आदमी काम कर सकते हैं। 6 दिन से ज़्यादा किसी को काम करने के लिए माइंस में अलाउ नहीं किया जाएगा। 29 compensatory day of rest, when in pursuance of action under section 38 or as a result of extincting any mine or the person employed therein is from the previous provisions of section 28 any persons employed therein deprived of any of the weekly days of rest for which provision is made in section 28, he shall be allowed within the month in which such days of rest was due to him or within 2 months immediately following that month, compensatory day of rest equal in number of days of rest of which he has been deprived। अगर किसी को वीकली रेस्ट नहीं दिया गया, कुछ ऐसा पोजीशन आ गया जो वीकली रेस्ट नहीं दे पाया, कुछ काम आ गया, उस कंडीशन में इमरजेंसी काम होने पे उसको वीकली रेस्ट
कब देना चाहिए, उन्होंने जिस वीक में काम किया, रेस्ट डे में काम किया, उसी मंथ में या उसका इमीडिएटली 2 मंथ बाद में, पिछले मंथ में इक्वल नंबर ऑफ डेज उनको रेस्ट के तौर पर कंपेंसेटरी रेस्ट दिया जाएगा। The central government may prescribe the manner in which the days of rest for which provision is made in subsection on shall be allowed. Central government ये prescribe manner पे इसको compensatory day of rest को prescribe कर सकते हैं, जो कैसे इसको दिया जाएगा। Next section 30. No adult employed above ground in a mine shall be required or allowed to work for more than 48 hours in a week or for more than 9 hours in a day. above ground का केस में आप मैक्सिमम एक दिन में 9 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टोटल जो वर्क है वीकली वो 48 आवर होना चाहिए। मीन्स 6 डेज अगर आप काम करें तो 8 आवर, एवरेज 8 आवर पर डे, 9 आवर आप एक दिन मैक्सिमम कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू previous approval of the chief inspector, the daily maximum hours specified in the subsection may exceed in order to facilitate the change of shift. चिफ इंस्पेक्टर्स की अप्रूवल लेकर के शिफ्ट चेंज के लिए जरूरत पड़ने से ये 9 आवर्स की जगह इसको बढ़ा भी सकते हैं। The period of work of any such adult shall be so arranged that along his interval of rest they shall not in any day spare over more than 12 hours, and that he shall not work for more than 5 hours continuously before he has had an interval of rest of at least half an hour. इसमें एक और चीज है, जो 5 आवर आप काम करने से हाफ एन आवर का मिनिमम रेस्ट होना चाहिए, ये भी एक प्रोविजन यहाँ पे है। प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग and subject to such condition as he may deem fit to impose, permit the spared over the extent over a period of not exceeding 14 hours in any day. अगर इमरजेंसी केस में कुछ इमरजेंसी हुआ या कुछ कंडीशन में चीफ इंस्पेक्टर इसको रीजन रिकॉर्ड करके मैक्सिमम 14 आवर तक अलाउ कर सकते हैं। पर्सन्स बिलोंगिंग टू 2 or more shift shall not be allowed to do work for of the same kind above ground as the same time. तो अलग अलग शिफ्ट या अलग अलग शिफ्ट का लोगों को एक ही काम एक ही साथ में अबव ग्राउंड में नहीं करने देना है। प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बिलोंग टू सेपरेट शिफ्ट by reason only the fact that they receive their intervals of rest at different time. और इस पर्पस के लिए अलग अलग शिफ्ट को ऐसे नहीं बुलाना है जो उनको इंटरवल अलग अलग टाइम पे दिया जाए। hours of work below ground, that was for above ground, and below ground में क्या बोल रहे हैं, no person employed below ground in a mine shall be allowed to work for more than 48 hours in a week or more than 8 hours in a day. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, टोटल वीकली आवर जो वर्किंग आवर है 48 आवर्स सबके लिए है, अबव ग्राउंड हो या बिलो ग्राउंड हो, बट एक दिन का मैक्सिमम वर्किंग जो लिमिट है ये अबव ग्राउंड में नॉर्मली 9 आवर्स मैक्सिमम कर सकते हैं, अंडरग्राउंड में ये नॉर्मली 8 आवर्स ही मैक्सिमम कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट subject to previous approval of chief inspector, the daily maximum hours specified in subsection may be exceeded in order to facilitate the change of shift. ये चेंज ऑफ शिफ्ट अंडरग्राउंड या अबव ग्राउंड बोथ केस में अगर इसको अप्रूवल लेना है, कुछ एग्जामिशन लेना है, कुछ एक्सीड करना है, तो चीफ इंस्पेक्टर का अप्रूवल चाहिए। नो वर्क शैल बी कैरिड ऑन बिलो ग्राउंड इन एनी माइन एक्सेप्ट बाय a system of shifts so arranged that the period of work for each shift is not spread over more than the daily maximum hours stipulated in subsection on. अंडरग्राउंड की जो शिफ्ट है उसको ऐसे डिजाइन करना है जैसे कि ये 8 घंटा जो लिमिट है उससे एक्सीड ना करे। No person employed in a mine shall be allowed to be present in any part of mine below ground except during the period of work shown in respect of him
in the register maintained under subsection 4 of section 48. अगर सेक्शन 48 का सबसेक्शन 4 में जो रजिस्टर्ड मेंटेन अंडरग्राउंड का जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें अगर आदमी अटेंडेंस नहीं है तो उनको अंडरग्राउंड में रहना नहीं है। और ये रजिस्टर जो पहले कलर रजिस्टर होता था वो चेंज हो गया, अभी सभी का सेम रजिस्टर है, अंडरग्राउंड अबव ग्राउंड ओपन कास्ट एंड अबव ग्राउंड की हॉकिंग सबका अटेंडेंस सेम रजिस्टर में है। नाइट शिफ्ट, where a person's employee in a mine works on a shift which extends beyond midnight for the purpose of section 28 and 29, a weekly day of rest shall mean in his case for a period 24 consecutive hours beginning when his shift ends. The following day from him shall be deemed to be the period of 24 hours beginning when such shift end, and the hours he has worked after midnight shall be counted in previous day. नाइट शिफ्ट का केस में जो आवर्स वर्क किया गया उसको प्रीवियस डे में काउंट किया जाएगा, और इनका वीकली रेस्ट में जो है 1 डे मीन्स 24 आवर्स इंटरवल होना चाहिए। एक्स्ट्रा वेज फॉर ओवर टाइम, where in a mine a person walk above ground for more than 9 hours in any day, or walks below ground for more than 8 hours in any day, or walks more than 48 hours in any week, where above ground or below ground, he shall in respect of such overtime walk be entitled to wage at the rate of twice his ordinary rate of wage, the period of overtime work being calculated on a daily basis or weekly basis, whichever is more favorable to him. अगर किसी ने अपना स्पेसिफाइड ड्यूटी टाइम से ज़्यादा काम करते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड मतलब अंडरग्राउंड का केस में 8 आवर पर डे, अबव ग्राउंड के केस में 9 आवर पर डे, या वीकली 48 आवर्स से ज़्यादा अगर काम करते हैं तो उनसे वो ओवर टाइम का हकदार होता है। और ओवर टाइम जब होता है तो उसको ओवर टाइम ऐसे देना है जो उसका नॉर्मल जो वेज है उसके डबल देना है। Where any persons employed in a mine is paid on piece rate basis, the time rate shall be taken as equivalent to the daily average of his full time earning for the days on which he actually worked during the week immediately preceding the week in which overtime work has been done, exclusive of any overtime, and such time rate shall deemed to be ordinary rate of wage of such person। जो पीस रेटेड पर्सनस है उनको ओवर टाइम उनसे प्रीवियस वीक में जो काम किए थे उसी का बेसिस में ही बनाया जाएगा, provided that if such person has not worked the preceding week on the same or identical job, the time rate shall be based on the average of daily he worked in the same week excluding the overtime, or on the daily average of his earnings in any preceding week whichever is higher। अगर किसी ने सेम काम को प्रीसीडिंग वीक में नहीं किया उस केस में उसको इसी वीक का कंसिडर किया जाएगा, या उसका एवरेज अर्निंग प्रीसीडिंग वीक का जो था उसमें से जो हाईएस्ट है उसको कंसिडर किया जाएगा। For the purpose of this section, ordinary rate of wage shall have the same meaning in the explanation of subsection 3 of section 8a. Subsection 3 is nothing is there. Subsection 4. The central government may prescribe the register to be maintained in a mine for the purpose of securing the compliance with this provision of this section. Extra wage के लिए अलग register बनाना के लिए central government बोल सकते हैं। Provision of employment of certain person. No person shall required or allowed to work in a mine if he has already been working in any other mine within the preceding 12 hours. किसी आदमी ने
अगर किसी दूसरा माइंस में 12 घंटा पहले काम कर चुके हैं तो उसको इस माइंस में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है या उसका काम सेवा नहीं लिया जा सकता है। लिमिटेशन ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्किंग इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम के लेकर कितना टाइम काम कर सकते हैं। सेफ इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लॉजेस फेलिंग विद द क्लॉज ए एंड क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 39। इसके अलावा नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन शैल रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ माइन फॉर मोर देन 10 आवर्स इन एनी डे एक्सक्लूसिव ऑफ ओवर टाइम। ओवर टाइम होने से भी 10 घंटा से ज़्यादा किसी को काम करने अलाउ नहीं किया जा सकता। नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क, द मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल cause to be posted outside the office of the mine a notice in prescribed form stating the time of commencement and the end of work at the mine, and if it is proposed to work by system for relay, the time of commencement and end of work for each relay। अगर अलग अलग शिफ्ट वर्क है तो शिफ्ट वर्क के कब से कब तक काम है, या सिंगल शिफ्ट रनिंग है तो कब से कब तक माइन चलेगा, ये माइंस ऑफिस में माइंस मैनेजर के द्वारा एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में इसको टाइम को दिखाना है, नोटिस देना है। इन केस ऑफ माइन at which mining operation commence after commencement of this act, the notice referred in subsection 1 shall be posted not less than 7 days before the commencement of work। ये माइंस एक्ट 52 आने के बाद जो माइंस ओपन करेगा इसमें जो नोटिस देना है वो नोटिस 7 डेज बिफोर, काम शुरू होने से 7 डेज बिफोर होना चाहिए। द नोटिस रिफर्ड इन सबसेक्शन 1 shall also state the time of the commencement and of the interval for rest for persons employed above ground, and copy thereof shall be sent to chief inspector if he requires। और ये जो नोटिस देना है इसके अंदर इंटरवल, रेस्ट इंटरवल, अबव ग्राउंड पर्सन का रेस्ट इंटरवल भी लिखना है और इसका एक कॉपी चीफ इंस्पेक्टर को भी भेजना है अगर चाहते हैं तो। Where it is proposed to make any alteration in the time fixed for commencement or for the end of work in the mine generally, or for any relay, or in the rest interval fixed for the person employed above ground, and amended notice in prescribed form shall be posted outside the office of the mine not less than 7 days before the change is made, and a copy of such notice shall send to the chief inspector not less than 7 days before such change। अगर इस टाइमिंग के कोई भी चेंज करना है तो इस चेंज का 7 दिन पहले नोटिस देना है और चीफ इंस्पेक्टर्स को भी नोटिस देना है। नो पर्सन शैल अलाउ टू वर्क इन ए माइन अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द नोटिस रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1। ये जो नोटिस दिया गया है, जो टाइम दिया हुआ है, इसके बाहर किसी को माइंस में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। Supervising staff, nothing of subsection 28 as of section 28, 30, 31, 34 or subsection 5 of section 6 shall apply to the persons who may by rule be defined to be persons holding position of supervision or management or employed in a confidential capacity। ये सब सेक्शंस उन लोगों के लिए लागू नहीं होगा जो सुपरविजन, मैनेजमेंट या कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में काम करते हैं। सेक्शन 38 exemption for provisions regarding employment in case of an emergency involving serious risks to the safety of the mine or of persons employed therein, or in case of an accident where actual or apparent of, in case of any act of God, or in case of any urgent work to be done to machinery, plant or equipment of the mine
as the result of breakdown of such machinery, plant or equipment, the management may, subject to provision of section 22 and section 22A, and in accordance with the rule under section 39, permit persons to be employed in contravention of section 28, 30, 31, 34, subsection 5 of section 36, work as may be necessary to protect the safety of the mine or of persons employed therein, provided that in case of any urgent work to be done to machinery, plant, or equipment under this section, the management may take action permitted by this section, although the production of mineral would be thereby be incidentally affected, but any action so taken shall not exceed the limit of necessary for the purpose of avoiding serious interference with ordinary working of the mine. इमरजेंसी केस में ये प्रोविजंस जो डिफरेंट सेक्शंस में है उसको मैनेजमेंट वापस कर सकते हैं. Every case in which action has been taken by management under subsection on shall be recorded together with the circumstances related thereto, and report thereof shall also be made to chief inspector or the inspector. अगर ऐसे इमरजेंसी केस कोई होता है तो हर एक केस को रिकॉर्ड करना है और इसको चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को भेजना है. Power to make exemptive rule. The central government may make rules providing for exemption of such extent in such circumstance and subject so such condition as may be specified from 5 of the provisions of section 28, 30, 31, 34 or subsection 5 of section 36 of all or any persons employed in mine where emergency involving serious risks to safety of the mine or persons employed therein apprehended. Of all or any persons so employed in case of accident actual or apprehended. Of any or of all or any of the persons engaged in work for a preparatory or complementary nature, which must necessarily be carried on for purpose of avoiding serious interface of, with ordinary working of the mine. Of all or any persons engaged in urgent repairs, and of all or any persons employed in work which is technical reason must be carried on continuously. इन सब केस में exemption कर सकते हैं. Employed in persons below 18 year age. After commencement of the Mine Amendment Act 1983, no persons below 18 year age shall be allowed to work in any mine or part thereof. माइंस एक्ट 1983 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद से कोई जिसको 18 इयर्स नहीं हुआ उसको माइंस में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. Notwithstanding anything contains in subsection on, apprentice and other trainees not below 16 years age may be allowed to work under proper supervision in a mine or part thereof by the manager. अप्रेंटिस और अदर ट्रेनिंग जिनका एज 16 से कम नहीं है, 16 to 18 के बीच में है, उनको माइंस मैनेजर स्पेशल परमिशन दे सकते हैं प्रॉपर सुपरविजन में काम करने के लिए. प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ट्रेनिंग other than apprentice, prior approval of chief inspector or an inspector shall be obtained before they allow to work. अप्रेंटिस के अलावा अदर ट्रेनिंग होने से चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेना जरूरी है. In the section in this section 40 and 43, apprentice mean an apprentice as defined in clause A of section 2 of the Apprentice Act 1961. 43. Power to require medical examination. When an inspector is of opinion that any person employed in a mine otherwise than as apprentice
or other trainee is not an adult, or that any person employed in a mine as apprentice or other trainee is either below 16 years of age or no longer fit to work, the inspector may serve on the manager of the mine a notice requiring that such person shall be examined by a certifying surgeon, and such person shall be examined by a certifying surgeon, and such person shall not, if the inspector so directs, be employed or permitted to work in a mine until this has been so examined and has been certified that he is an adult, or if such person is an apprentice or trainee, that he is not below 16 years of age and is fit to work. अगर चीफ इंस्पेक्टर्स को लगता है किसी ने अंडर एज है तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं. Every certificate granted by certifying surgeon on reference under subsection on shall be for the purpose of this act be conclusive evidence of the matter referred therein. 45. Provision of presence of persons below 18 years of age in a mine. Subject to provision of subsection 2 of section 40, after such date as the central government may by notification in the official gazette appoint in this behalf, no persons below 18 years of age shall be allowed to present in any part of mine above ground where an operation concerned with or identical to any mining operation is carried on. Next, 46. Employment of women. No woman shall, notwithstanding anything contained in any other law, be employed in any part of mine which is below ground, in any mine above ground except between hours 6 a.m. to 7 p.m. Not 7 a.m., 7 p.m. Every woman employed in mine above ground shall be allowed an interval of not less than 11 hours between the termination of employment of any day and commencement of next period of employment. 29 जनवरी 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गेजेट नोटिफिकेशन है उसके तहत ये चेंज हुआ है. अभी female woman employee can also do work anytime in a mine. Notwithstanding anything contained subsection on, the central government may, by notification in official gazette, vary the hours of employment above ground of women in respect of any mine or class or description of mine. So, however, that no employment of women between hours 10 p.m. and 5 a.m. is permitted hereby. 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अलाउ नहीं कर सकते हैं ये था. बट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट 29 जनवरी 2019 में जो गेजेट नोटिफिकेशन दिए उसी में वुमेन एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम माइंस में काम कर सकते हैं. ये अमेंडमेंट हुआ है. लास्ट इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन सेक्शन 48 रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड. For every mine there shall be kept in prescribed form and place registered of all persons employed in the mine, showing in respect of each such person the name of the employee with the name of his father or of her husband as case may be, and such other particulars may be necessary for purpose of identification, the age and sex of employee, the nature of employment, whether above ground or below ground, and if above ground, whether open cast working or otherwise, and date of commencement thereof, such other particle as may be prescribed, and the relevant entries shall be authenticated by the signature or thumb impression of the person concerned. The entries in the register prescribed by section 1 shall be such that the workers working in accordance there with would not be working in contravention of any of the provision of this chapter. No person shall be employed in a mine until the particulars required in subsection 1
have been recorded in the register in respect of such person, no person shall be employed except during the period of work shown in respect of him in register. Every mine other than a mine who is for special reason to be recorded as exempted by the central government by general or specific order, there shall be kept in a prescribed form and place separate register showing in respect of each persons employed in mine below ground, above ground in open cast working, above ground other case, name of the employee, the class of kind of employment, whether work is carried by a system or relay, the shift who is belonging, and the hours of shift. The register of persons employed below ground referred in subsection 4 shall show at the moment the name of every person who is there present below ground in the mine. No person shall enter any open cast working or any working below ground unless he has been permitted by the manager or is authorized under this act or is authorized under the act or any other law to do so. Okay. This was different section 28 to 48 in this chapter. अभी हम लोग इसका कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं. आइए. Provision of weekly day of rest is under section which section of the Mines Act? It is 28, 29, 30 or 31. The correct answer is 28. Provision of weekly day of rest is under 28. 28 नंबर सेक्शन में weekly day of rest के बारे में बताया गया है. Compensatory day of rest under section 29 of the mine shall be allowed within next 2 months, same month or next 2 months, none. The correct answer is same month or within next 2 months. Next, no adult employed above ground in a mine shall be required or allowed to work for more than dash hours in a week or for more than dash hours in any day. Option 48 and 9, 48 and 8, 54 and 8, 54 and 9. The correct answer is 48 and 9. For above ground case, याद रखना above ground case, total weekly working period is 48 for above ground and below ground, but above ground maximum daily working hour is 9, but below ground it is 8. The daily maximum hour specified to the Mine Act 1952 may exceed in order to facilitate the change of shift from collector, magistrate, chief inspector, mines manager, chief inspector. Chief inspector may allow to exceed this maximum specified time. Next question. No adult employed below ground in a mine shall be required or allowed to work for more than dash hours in any week or for more than dash hours in any day. Option 48-9, 48-8, 54-8, 54-9. The correct answer is 48 hour, 8 hour. Weekly it's 48 hour, for underground per day it's 8, for open cast or above ground any case it's 9 maximum. As per section 34, if a person worked in any other mine within the proceedings of dash hours, he shall not be allowed to work. 12, 10, 16, 8. Correct answer is and 18. The correct answer is 12 hours. Okay. No person shall enter any open cast working unless he has permitted by the owner, manager, assistant manager, safety officer, none of the options. So correct answer is manager. No person shall enter to open cast working or below ground working unless he is permitted by the manager. It's in section 48(6). थैंक यू आपने ये वीडियो देखे और अब सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इससे प्रीवियस 5 वीडियो अगर नहीं देखे तो आप देख लें, क्योंकि इसके बाद हम लोग माइंस एक्ट के बाद रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग वीडियो करने के बाद जो सैम्पल क्वेश्चन आंसर करेंगे वहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है. हम लोग कुछ लाइव सेशंस लेंगे
जिसका लिंक आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर दिया जाएगा, और उसमें लाइव सेशंस करके, उसी का भी जो लोग लाइव सेशन में रह नहीं पाएंगे अपना ड्यूटी के चलते या कुछ और कारण से, उनको भी वीडियो इस चैनल में शेयर किया जाएगा। आपका डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप में बीच-बीच में हम लोग देते रहेंगे। और आपके अगर कोई और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ ज़रूरत है, तो आप HRDC में मेल कर सकते हैं या हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।